Hello guys, welcome back to the channel. My name is Chandrika. This is the second video of free CSAT series that I have started. Please, if you're new to this channel, please watch the earlier video. In this video, we are going to discuss divisibility test topic, which is an important part of number system. But before proceeding to discuss this topic, I want to discuss two things. In earlier video, I forgot to tell you one thing, that whatever logic and tricks I am going to teach you for a certain type of questions, you have to use those tricks in other type of questions as well. Same logic आपको अलग अलग questions में भी use करना है. And second thing is, watch this video entirely. Okay, watch this video till the end. Don't skip, because in CSAT you won't understand the logic if you watch this video by skipping. Otherwise it is a waste of time. Now let's begin with the topic. So in this topic we are going to discuss divisibility test for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Divisibility test meaning we will learn which numbers will be divisible by these digits. First we will study divisibility of 2. Means what kind of numbers are divisible by 2. So any number which has 0, 2, 4, 6 or 8 at its unit place will be divisible by 2. For example, 200, 204, 168, etc. 161 obviously will not be divisible by 2 because there is a unit place by 1. And of course, you know, odd numbers are not divisible by 2. Even numbers are divisible by 2. Second is divisibility of 3. Divisibility of 3 says that sum of digits in that number should be divisible by 3. So let's take this number 1, 2, 3, 4, 5 is the number, and we have to check whether this number is divisible by 3. This number is divisible by 3 if the sum of its digits, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, is divisible by 3. Now let's see the sum. 5, 4, 9, 12, 15. So this 15 is divisible by 3. So this number is divisible by 3 because sum of its digit is divisible by 3. Now next number is 4. Any number is divisible by 4 if the number formed by last two digits is divisible by 4. Let's take the number is 776. Now let's check if number formed by last two digits, that is 76, is divisible by 4. Therefore 776 is divisible by 4. Right? Now next number is 5. Very easy. Any number which has 0 or 5 at its unit place will be divisible by 5, like 55, 50, 60, 65, 105, all are divisible by 5 because there is a 0 or 5 at its unit place. Next number is 6. Any number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. So remember and. So that number has to be divisible by 2 as well as 3. Then only it is divisible by 6. Because if we do prime factorization of 6, we get 2 into 3. So any number which is divisible by 2 as well as 3 will be divisible by 6. Now next is 7. Now let's see 7 ki divisibility. To find whether number is divisible by 7 or not, this is the strategy. Remove last digit, double the digit, subtract that digit from truncated number, and continue this until one digit remains. If that remaining one digit is either 0 or 7, then that number is divisible by 7. So let's take example. Let's say the number is 1603. So what the logic is saying, take the first unit digit 3, double it, that is 6, then subtract it from the remaining number, that is from 160. So it is 154. Now again do the same thing. Take the last digit 4, double it 8, subtract it from remaining number, that is 15. So what remains is 7. So as we said, if that last digit is 0 or 7, then that number is divisible by 7. So last digit remaining is 7. Therefore this number 1630 is divisible by 7. सो नेक्स्ट नंबर का डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है 8 के लिए. नाउ 8 एंड 4 हैव सिमिलर डिविजिबिलिटी टेस्ट. 4 के लिए था कि लास्ट टू डिजिट्स से जो नंबर बनता है अगर वो डिविजिबल बाय 4 है देन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सिमिलरली 8 के लिए अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है इज डिविजिबल बाय 8 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8. राइट. देन 9 एंड 3 का सिमिलर है.
डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए था सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, 9 के लिए इफ उस नंबर में सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 then that number is divisible by 9. Now 10 के लिए easy, any number which has 0 at unit place will be divisible by 10, common sense, 100, 500, 60 all are divisible by 10. And then 11 का divisibility test है, any number will be divisible by 11 if difference between sum of digits at odd place and sum of digits at even place is divisible by 11 or the difference is 0. So let's take example. So let's say number is 2728. Now we have to do addition of numbers at odd places and numbers at even places. So ये 8, 7, 15, 2 plus 2 4, इनका difference आता है 11. So the difference is divisible by 11. This difference 11 is divisible by 11. Therefore this number is divisible by 11. तो कोई भी number के odd digits और even digits के sum का difference अगर divisible by 11 हो और that difference is 0, then that number is divisible by 11. Now that we have learned all the divisibility test for these digits, let's move on to the PYQ. So we'll discuss only 2 PYQs and then rest of the PYQs will be covered in next video immediately. Okay, so let's do this question. So question here is, how many 5-digit prime numbers can be obtained by using all digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of digits? So this is a question from 2020 का UPSC का CSAT. So they are asking 5-digit prime numbers, ऐसे कौन से 5-digit prime numbers है जो हम इन digits से बनाएंगे without repetition of digits that are like prime numbers होंगे. So उन्होंने कहा कि let's say these are 5 digits 1, 2, 3, 4, 5. तो इनको यूज़ करके कोई भी जो 5 digit का नंबर बन रहा है तो उनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर्स होंगे, राइट? दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड. नाउ अब अगर हम 1, 2, 3, 4 ऐसा एक नंबर बन सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, अब बहुत सारी ऐसे नंबर्स बन सकते हैं. तो अगर आपको पता है परम्यूटेशन के बारे में, तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इज 5 फैक्टोरियल. क्योंकि 5 डिजिट्स है उनको यूज़ करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो हो जितना भी होता है 120 होता है. सो देर आर 120 नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5. अब आप हर एक नंबर को तो चेक नहीं करेंगे कि वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, बिकॉज दैट वुड बी टू टाइम कंज्यूमिंग, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पे यूपीएससी ने एक ट्रिक दिया है जो आपको पकड़ना है कि 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप इस डिजिट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इस डिजिट से कोई भी नंबर अगर बन रहा है तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज व्हाट? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 which is 15, and 15 is divisible by 3. Therefore no number formed by using digits 1, 2, 3, 4, 5 is prime number क्योंकि it is divisible by 3. क्योंकि प्राइम नंबर इज़ द वन जो कि खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है. लेकिन ये जो नंबर बनने वाले हैं यूजिंग 2, 3, 4, 5, दिस इज गोना बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल. देयरफॉर नो नंबर formed using this is going to be a prime number. So answer is 0. Now let's discuss the next question. Now the question is, an 8-digit number 452746b leaves remainder 0, matlab it is divisible by 3, right? When divided by 3, how many values of b are possible? तो उन्होंने कहा एक 8-digit number है 4252746b and this number is gives remainder 0, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 3. अब हमने देखा है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. सो लेट्स चेक सम ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर. तो ये नंबर है, लेट्स डू सम ऑफ इट्स डिजिट्स. तो 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, तो ये कितना होता है? सो ये इतना आता है 30. 30 + b इज द सम ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर. अब हमको निकालना है कि b की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है. सी बी एक डिजिट है, तो डिजिट कौन सा हो सकता है? या तो वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो हमें देखना है कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है. लेट्स से बी इज 0. अगर बी 0 होता है तो ये 30 + 0 हो जाएगा 30. नाउ 30 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर बी कैन बी 0, तभी ये नंबर डिविजिबल बाय 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा.
इफ वी टेक b as 1 तो ये हो जाएगा 30, 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, राइट, सो b कैन नॉट बी 1। अगर हम b2 लेते तो ये 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। अगर b4 लेते तो ये सम हो जाएगा 34, 35, 36, ये 37, 38, 9 अगर b की वैल्यू लेते तो 39। तो अब इन नंबर्स में से हमको देखना है कि विच आर डिविजिबल बाय 3। सो 30 इज डिविजिबल बाय 3, तो b कैन बी 0, राइट। 31 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो b कैन नॉट बी 1। 32 इज डिविजिबल बाय 3, नहीं। 33 इज डिविजिबल बाय 3, यस, तो 3 हो सकता है। 34 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 35 इज नॉट डिविजिबल, 36 इज डिविजिबल बाय 3, तो b कैन बी 6। 37 इज नॉट डिविजिबल, 38 नहीं। 39 इज डिविजिबल बाय 3, तो वो 9 भी हो सकता है। देयरफॉर b कैन बी आइदर 0, 3, 6, 9, बिकॉज ओनली इफ b इज 0, 3, 6, 9, तभी ये जो नंबर में डिजिट्स की सम होगी, अगर यहाँ पे 0, 3, 6, 9 होगा b की जगह, तभी इस नंबर के सम की डिजिट सम ऑफ डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3, राइट। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज 0, 3, 6, 9, तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है, सो आंसर इज 4। That's it. The next questions on this topic will be covered in another topic. Another important thing, please watch this series consistently so that you develop logic for this type of questions. So thank you so much, and please subscribe to the channel so you get to access this series. Thank you so much.